Okay, let's start. Aerobic respiration. Aerobic respiration, as we have discussed in the differences, is the energy harvesting process, means energy making process, we can say, from the complete breakdown of organic molecule. Overall process we can explain by the reaction. Here you can see the glucose molecule when react with oxygen break into carbon dioxide, water and energy in the form of ATP. Uh, Cellular respiration mechanism consists of the following stages. As you know, we have discussed in the differences between the aerobic and anaerobic respiration, where the first step is the glycolysis, next is the link reaction, third one Krebs cycle, and the next one is electron transport chain. Where the glycolysis takes place in the cytoplasm, and remaining three, link reaction, Krebs cycle and electron transport chain, take place in the mitochondria. Now start first step of respiration, which is called the glycolysis, and it is the common step of both kind of respiration, aerobic and anaerobic respiration. ठीक है, नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होता होगा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको ड्राइव फ्रॉम द ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन. तो यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है इस फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक या एनारोबिक रिस्पायरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती. ठीक है, यानी कि अगर ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रिस्पायरेशन में हो रहा है तब भी और एनारोबिक रिस्पायरेशन में हो रहा है तब भी जो है वो इस स्टेप में ऑक्सीजन की नीड नहीं होगी. विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी. अच्छा, अब ये है कि ये जो प्रोसेस है ये होता कहाँ है, यानी कि साइट, वट एवर एरोबिक respiration take place or anaerobic, here this is step take place in the cytoplasm or cytosol. End product, यानी कि अब यहाँ पे जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई तो इसके रिजल्ट में बनता क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है. तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस आर 2 pyruvate, which are the 3 carbon compound, 2 ATPs and 2 NADH molecules, means nicotinamide dinucleotide. अब एक चीज इंपॉर्टेंट कि इस जगह पे जो ये ATP फॉर्मेशन हो रही होती है, इस ATP की फॉर्मेशन को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. दिस इज द रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन कि कभी अक्सर बनता है कि why it is called the substrate level phosphorylation, because phosphate group ATP फॉर्मेशन के लिए जब ADP के साथ फॉस्फेट कंबाइन होता है तो फिर ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस में जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, वो प्रोवाइड करते हैं ये फॉस्फेट. दैट्स व्हाई हियर द ATP फॉर्मेशन इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. गॉट इट? Now we'll start the mechanism of glycolysis. Glycolysis mechanism consists of the series of biochemical reaction which take place with the help of different enzymes, and this entire process divides into 2 phases. Number 1 is the preparatory phase. Initial phase is called the preparatory phase, where we'll see the ATP used, whereas in the next stage or the phase we will see ATP generate, and this is called the payoff phase. यानी कि जहाँ तक आपको ATP बनते हुए नजर आएगी आगे मैकेनिज्म में, वो कहलाएगा प्रिपरेटरी फेज, और जिन स्टेप्स में आपको ATP जनरेट होते हुए नजर आ रही होगी उसे हम कहेंगे payoff phase. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म. फर्स्ट you can see here glucose, which is the 6 carbon compound, and it by using 1 ATP it converts into glucose 6 phosphate. Here 6 number 6, ये जो 6 है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, it indicates the position on glucose
where it present यानी कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसके कार्बन नंबर 6 पे जो है वो एक फॉस्फेट प्रेजेंट है, राइट. In the next step, isomerization process take place where we can see the glucose 6 phosphate change into fructose 6 phosphate, and then fructose 6 phosphate by using one more ATP change into fructose 1,6 biphosphate और fructose 1,6 bisphosphate, दोनों ही कह सकते हैं. तो अब आपने देखा कि यहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कार्बन नंबर 6 पर जो एक फॉस्फेट प्रेजेंट था, मजीद एक फॉस्फेट इसमें ऐड हुआ और वो आकर कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो गया, इसलिए अब 1,6 बाइफॉस्फेट कह रहे हैं इसको, यानी कि या फिर बिसफॉस्फेट कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो फॉस्फेट अब इसके साथ अटैच हो चुके हैं. ओके, नाउ the fructose 1,6 bisphosphate or biphosphate is split into two different molecules having three carbons. Number one is the 3-phosphoglyceraldehyde and number two dihydroxyacetone phosphate. Both are isomers and contain 3 carbons, you can see here, and also contain 1 phosphate. यानी कि fructose 1,6 bisphosphate के पास 6 कार्बन थे और 2 फॉस्फेट थे, स्प्लिट हो गया दो 3 कार्बन कंपाउंड्स में, ठीक है, दोनों के पास 3 कार्बन प्रेजेंट है और एक एक फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, ठीक है. एंड बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल टू ईच अदर, यानी कि ये आइसोमर्स हैं, तो ये आइसोमराइजेशन के थ्रू जो है ये डाइहाइड्रोऑक्सीएसीटोन फॉस्फेट भी जो है वो 3-फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है. Now finally we have two molecule of 3-phosphoglyceraldehyde, ठीक है. Then each 3-phosphoglyceraldehyde by using phosphoric acid which is present in the cytoplasm change into 1,3-bisphosphoglyceraldehyde, ठीक है. दोनों ही मॉलिक्यूल एक जैसा काम करते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट यानी कि उसको यूज़ करके उस फॉस्फेट ग्रुप को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फॉस्फेट अटैच हो गए, एक कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा जो है वो कार्बन नंबर 3 पे. इन द नेक्स्ट स्टेप बोथ 1,3-bisphosphoglyceraldehyde by releasing hydrogen ion change into 1,3-bisphosphoglyceric acid और glycerate. यहाँ आपने देखा कार्बन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है, फॉस्फेट नंबर में कोई चेंजिंग नहीं है. एल्डिहाइडिक ग्रुप when remove hydrogen ion change into carboxylic group, तो यहाँ पे इसे हम बिसफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का नाम देते हैं. Now both 1,3-bisphosphoglycerate or 1,3-bisphosphoglyceric acid change into 3-phosphoglycerate or 3-phosphoglyceric acid by removing phosphate group which present at carbon number 1 and the phosphate group combined with ADP to form ATP, and in this stage here two ATPs are formed because of the two molecule of 1,3-bisphosphoglycerate. The next step we can see the change in the position of phosphate group. At the result both 3-phosphoglycerate or the 3-phosphoglyceric acid change into 2-phosphoglycerate or 2-phosphoglyceric acid. पहले कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट प्रेजेंट था और अब पोजीशन चेंज हो गई और अब कार्बन फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 2 पर आ गया. In the next step both
2-phosphoglycerate or 2-phosphoglyceric acid release hydrogen and oxygen in the form of water and change into two molecule of 2-phosphoenol pyruvate. In last stage of glycolysis, both phosphoenol pyruvate lose or release their phosphate group and both are converted into pyruvate or the pyruvic acid. Whereas phosphate transfer to ADP forming ATP. Total at this stage 2 ATPs are formed. Here you can see in this overall payoff phase or yielding phase, total 4 ATPs are formed in 2 stages. But the net gain of ATP during glycolysis are only 2 because in initial stage during preparatory phase 2 ATPs are used. And one thing more, here now you have clear your concept why during glycolysis the ATP formation is called substrate level phosphorylation, because here you can see during ATP formation the phosphate group come from the substrate molecule or the intermediate compounds of the glycolysis.